Assalamualaikum students. Our today's topic is the Newton's second law of motion. We are going to cover this whole topic in one session in one video. And so starting it with the statement. The statement of this law says that a net force, or we can call this net force an unbalanced force. I will explain it in a moment, applied on the body produces an acceleration a in the body. So this acceleration is directly proportional to the magnitude of the net force and is inversely proportional to the mass of the object. So about that, this thing means, we have to discuss the statement first, right? So a net force, what does this net force means? इसका मतलब ये है that if you have this object, this this sharpener over here, and if I'm going to apply 5 Newton force from the right and 5 Newton's force from the left, then this kind of forces is called balanced force. Okay, so these forces will balance each other, they will cancel out each other, and this pen this sharpener would not move at all. So in this case, the net force is 0. Okay, the total force, net force means that the total force. So the total force is 0 because these forces actually balance each other. But what would happen if I apply 5 Newton force from the right side and 10 Newton's force from the left side? In this case, this 5 Newton and this 5 Newton would balance each other, but this extra 5 Newton, right? So 10 minus 5, this extra 5 Newtons would cause, an acceleration towards the left side. Okay, so the body will move towards the left because here I'm applying double the force, right? So in this case, there is an additional 5 Newton force. So in this case, the net force would not be 0, and the net force in this case would be 5 Newton. Okay, 10 minus 5, 5 Newtons towards the left, right? So in this case, we have an unbalanced force, and unbalanced force by definition, the force whose net effect or resultant effect is not 0. So in this case, as I've told you, for the case I've discussed with you, is the 10 versus 5 Newton force. In this case, this would be an unbalanced force. This would be some kind of net force. There will exist a net force in this case, which will move this sharpener towards the right. So in this case, a net force applied on that body. So कौन सी force हम apply करेंगे? Of course एक net force, ऐसी force जिसको का effect zero ना हो, एक ऐसी force जिसमें हमारे पास resultant zero ना आए. So a net force or unbalanced force applied on the body, whenever this kind of net force or unbalanced force is applied on the body, this force produces an acceleration. So पहली बात क्या कि जब भी हम किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, ये ऐसी फोर्स जिसका इफेक्ट जीरो ना हो, ओके, सो इसका कोई ना कोई नेट इफेक्ट हो, कुछ ना कुछ फोर्स उस पर एक्ट कर रही हो. सो इन दैट केस, जब भी हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे, देन उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, राइट? In the body, this acceleration is directly proportional to the magnitude of net force. Okay, so this acceleration, which is represented by a, this is directly proportional to the magnitude of net force. Okay, not the direction, of course, it's not necessarily equal to the direction. So but in this case, if we increase the force, the acceleration would also increase. But if we would just decrease the force, then of course acceleration would also decrease. So directly proportional जब भी आपके पास word आ जाएगा, it would mean that the force would decrease, or acceleration would decrease with force, or force would decrease with the acceleration, of course, or we can say that the force would increase with the acceleration. So अगर एक quantity को हम increase करते हैं तो दूसरी भी increase होगी, अगर एक को decrease करते हैं then दूसरी भी decrease होगी. So in notes I have the first point: if two quantities are directly proportional, then by increasing one quantity the other one also increases. ठीक है, so जब भी दो quantities directly proportional होंगी, it would mean दैट एक को इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज होगा और एक को डिक्रीज करने से दूसरा भी डिक्रीज होगा. सो इन दिस केस,
this acceleration is directly proportional to the magnitude of force. ठीक है, so acceleration and force हमारे पास directly proportional आ गए. And the other thing is this acceleration is inversely proportional to the mass of the object. हम जिस acceleration के बारे में बात कर रहे हैं that is inversely proportional to the mass of the object. Inversely proportional का मतलब क्या है? It means that if two quantities are inversely proportional, then by increasing one quantity, the other one decreases, or by decreasing one quantity, the other one increases. So अगर हम एक quantity को decrease करेंगे, then उससे जो inversely proportional quantity होगी increase हो जाएगी, and अगर एक को increase करेंगे तो दूसरी decrease हो जाएगी. Therefore हमारे पास यहाँ से दो points मिलते हैं हमारे पास जिनको हम mathematically भी define कर सकते हैं, and these two points would become A is directly proportional to F. So अपनी हमने जो हमारे पास statement थी उसे क्या किया, हमने sum up कर दिया दो separate points में. The first point was this acceleration is directly proportional to the magnitude of force. So acceleration is directly proportional to the magnitude of force. This symbol आप कभी आप ऐसे भी draw कर सकते हैं and ऐसे भी draw कर सकते हैं. I hope you are familiar with it. So this is this symbol of proportional or proportionality. ठीक है? So A is directly proportional to F. Directly proportional का क्या मतलब है? It means अगर A यहाँ पर multiply हो रहा है then F भी यहाँ पर multiply होगा. दोनों numerator में होंगे, denominator में कोई नहीं होगा. ठीक है? So in this case A भी numerator है, F भी numerator है. So in this case A and F are directly proportional. दूसरा पॉइंट क्या है? This acceleration is inversely proportional to the mass of the object. It means that if A is in the numerator, then now M will be in the denominator. Therefore, we can say that A is directly proportional to 1 over M, or A is inversely proportional to M. Okay, आप ये नहीं कहेंगे that A is inversely proportional to 1 over M. It would be wrong. Either A is directly proportional to 1 by M, or A is inversely proportional to M. Okay, so in this case we will call it inversely proportional to M. Inversely proportional के लिए ज़रूरी है अगर एक quantity numerator में है then दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी के दूसरी साइड पर जो है वो डिनोमिनेटर में हो, एंड अगर एक डिनोमिनेटर में है तो दूसरी न्यूमरेटर में हो. इन दिस केस दिस काइंड ऑफ असेंबली रिप्रेजेंट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड एफ, and this kind of assembly or this kind of equation represent direct relation, directly proportionality, which is between A and F. So A is directly proportional to F and A is inversely proportional to M. अगर A को increase करेंगे F भी increase होगा, F को करेंगे increase then A भी increase होगा. But in this case in equation number 2, अगर हम A को increase करेंगे then M decrease होगा, and अगर M को increase करेंगे then A decrease हो जाएगा. Okay, so whenever we have such kind of equations जिनकी कोई एक साइड सेम हो, इन दिस केस आपके पास जो इक्वेशन 1 and 2 है इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है और ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशंस है. इन दिस केस हमेशा याद रखें ऐसी इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं. ओके, इन दिस केस कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंबाइन कैसे करेंगे? लेट्स सी. इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो हम लेफ्ट हैंड साइड को एक ही दफ़ा लिखेंगे, यानी ए एक ही दफ़ा आ जाएगा हमारे पास. इस प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड सेम था, हमने उसे एक ही दफ़ा लिख लिया. प्रोपोर्शनल टू F भी अलग है, 1 by M भी अलग है. इन दिस केस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F मल्टीप्लाइड बाय 1 over M. ठीक है, सो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसकी कोई एक साइड सेम हो तो उन दोनों को कंबाइन करके साथ लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशंस में. So A is directly proportional to F into 1 by M. F into 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, F multiplied by 1, F divided by M वैसा ही रहेगा. So we got this equation. Okay, basic equation हमारे पास बन चुकी है. Now coming towards one more important point. Remember that whenever you have an equation with proportionality,
अब हम चाहते हैं नहीं इसे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में नहीं, इसे इक्वल के साइन में लिखें, इसमें इक्वल का साइन बीच में प्लेस करें. सो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को कन्वर्ट करेंगे इक्वल के साइन में, देन वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ओवर हियर. ठीक है, कांस्टेंट, यू नो, it could be a number or it could be any fixed kind of number or any fixed value. So in this case we have to replace this proportionality sign with the sign of equality and introduce a constant. So replacing the sign of proportionality with equality and introducing a constant, हमने proportionality के sign को replace कर दिया equal से, a is equal to, साथ ही एक constant introduce किया which is k. k is a constant और इसकी value आगे चल के हम निकालेंगे और इस पे place भी करेंगे. k is the constant and f by m वैसे ही रहेगा. सो सिर्फ हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह इक्वल का साइन डाल दिया और एक साथ k डाल दिया विच इज़ कांस्टेंट. अब अगर हम एक काम करें दैट मास 1 kg लें, एक्सेलरेशन की जगह भी 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर प्लेस कर दें, देन ऑफ कोर्स फोर्स भी क्या बन जाएगी 1 न्यूटन. सो हम अगर इन तीनों क्वांटिटी को a, f और m को 1 1 1 के प्रोपोर्शन से ले लें, देन we can use these value in equation 3. So if m is equal to 1 kg, a equals to 1 meters per second square and f is equal to 1 Newton, then using these values in equation 3. So हम a की जगह भी 1 place कर देंगे, f की जगह भी 1, m की जगह भी 1. In this case 1 by 1 भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा और 1 multiply by k, of course k. So 1 divided by 1 1 and 1 into k, k आ गया यहाँ पर और ये वाला 1 वैसे ही रहेगा. 1 is equal to k or we can say that k is equal to 1. So यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई, जो हमारा कांस्टेंट k था हमने उसकी वैल्यू निकाल ली. ओके, सो अगर हमारे पास k की वैल्यू आ गई है तो क्या हम इसे इक्वेशन 3 में यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन. सो इन दिस केस यूजिंग k is equal to 1 from equation number 4, यहाँ से जो हमें k equals to 1 मिला in equation 3, we have used this k equals to 1 in equation 3. So equation 3 में k की जगह क्या प्लेस कर देंगे 1. a is equal to 1 into f by m. एंड जब हम लोग 1 और f को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एफ वुड गिव अस f. ठीक है, सो a इक्वल्स टू f बाय m. और वी कैन राइट इट एज, जब भी हमारे पास कोई चीज़ एक साइड पर डिवाइड हो रही हो दूसरी साइड पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो अगर हम मैथ्स को यहाँ पर डिवाइड में लिख रहे हैं तो दूसरी साइड पर ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. a मल्टीप्लाइड बाय m इक्वल्स टू f, या फिर हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एम ए. ओके, एफ को साइड पर इस राइट हैंड साइड को अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया एंड लेफ्ट को राइट हैंड साइड पर. बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट. सो वेयर डिड वी स्टार्ट? a is directly proportional to f, ये भी हमने अपनी स्टेटमेंट से लिया, एंड a is inversely proportional to 1 by inversely proportional to m, ये भी हमने अपनी डेफिनेशन या स्टेटमेंट से लिया. हमने इन दोनों को दोनों प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशंस थी और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी, तो हमने इन्हें कंबाइन करके लिख दिया. लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज सेम थी सो एक ही दफ़ा आ गई, यानी a हमारे पास एक ही दफ़ा आ जाएगा. इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f इंटू 1 बाई m. दोनों जो अलग अलग टर्म्स थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. f इंटू 1 वुड गिव अस f. सो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f बाई m. अब हम चाहते हैं कि हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इंक्लूड ना करें, हम इसे इक्वल के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो रिप्लेसिंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद इक्वालिटी, एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए कॉन्स्टेंट. हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह इक्वल का साइन डाला एंड कॉन्स्टेंट के इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर. एंड अब हम क्या करेंगे, जस्ट इस के की वैल्यू फाइंड करेंगे. उसको फाइंड करने के लिए हम इन तीनों टर्म्स को a, f एंड m को 1 1 1 कंसिडर करेंगे और वैल्यूज प्लेस कर देंगे. सो m इज इक्वल टू 1 kg, a इक्वल्स टू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड f इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यूजिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3. जैसे हमने वैल्यूज़ प्लेस की सो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 ये 1 आ जाएगा और वो जो 1 आएगा वो k के साथ मल्टीप्लाई होकर अगेन k दे देगा और दूसरी साइड पर 1 वैसे ही रहेगा. 1 इज इक्वल टू k और वी कैन राइट इट एज k इक्वल्स टू 1. ये k की वैल्यू आ गई. वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4. यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 में k की जगह हमने 1 प्लेस कर दिया, 1 इंटू एफ. f ही रह जाएगा डिवाइडेड बाय m. a इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय m. m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. a m इज इक्वल टू f और वी कैन राइट इट एज f इज इक्वल टू m a.
This equation is the mathematical form of Newton's second law. So we have discussed the statement of Newton's second law as well as the mathematical form of Newton's second law. Remember that ये Newton's second law बहुत ज़्यादा use होता है आपकी numerical problems में and assignments में. So you have to practice this equation really well. The last point is the acceleration. Of course, हमने पढ़ा if the net force is applied on a body, acceleration is produced. Then what would be the direction of this acceleration? The direction of acceleration and direction of force will always be the same. Okay? So these were all the points that we needed to discuss today. Thank you so much, everyone.